Every home was a small Gurukul. First step of the Gurukul, that was the every home. And when this was the situation, then politics was a mandatory subject for every student. At that time, India was on the peak, not only in terms of civilization, but economic, as well as the social value, ethics. Especially people from the field of education, teachers, school, colleges. There was the time when politics was mandatory for every student in Gurukul or even in house also. All top successful person. You take example in past from different countries, Socrates, Socrates, Chanakya, all they were the great learned type of the people. That was not the situation that they were not having any kind of the job or they were not engaged in any kind of the profession. They were the top talented person from their period, from their time scale. They joined politics. All top successful person. You take example Nelson Mandela, very strong personality as well as the very successful, very much learner. You can say Abraham Lincoln, that is another example. In India, you take Subhash Chandra Bose. Of course, he was the first ICS candidate topper from India. But for nation, he thought that something should be done. He joined the active type of the politics as per the situation. Especially people from the field of education, teachers, school, colleges. There was the time when politics was mandatory for every student in Gurukul or even in house also. Every home was a small Gurukul. First step of the Gurukul, that was the every home. And when this was the situation, then politics was a mandatory subject for every student. At that time, India was on the peak, not only in terms of civilization, but economic, as well as the social value, ethics. आईआईटी से भी बढ़िया क्या कोई कैरियर हो सकता है? आईआईएम से भी बढ़िया कहीं कोई कैरियर हो सकता है? क्या यूपीएससी, आईएएस, नीट, डॉक्टर, इंजीनियर, उनसे भी बढ़िया क्या कोई कैरियर हो सकता है? क्या ऐसा कोई कैरियर हो सकता है जिसमें 90%, 99% परसेंटेज या परसेंटाइल की जरूरत ना हो, जिसके लिए आपका टॉपर होना अपरिहार्य योग्यता न हो, जरूरी न हो, जिसके लिए आपको किसी एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर न होना पड़े? कि क्यों बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आईआईटी क्वालिफाइड, आईआईएम टॉपर्स अपनी जॉब को छोड़ के भला ऐसा कौन सा कैरियर है जिसको ज्वाइन करने के लिए लालायित रहते हैं? क्यों तमाम बड़े बड़े खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोग, मीडिया की दुनिया से सफलतम व्यक्ति, बिजनेस की दुनिया से सफलतम व्यक्ति इस कैरियर, इस फील्ड को ज्वाइन कर लेते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं? तो भूलिएगा मत, 8 दिसंबर 2025 को दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आप अपना टिकट आज ही बुक करिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे
ग्लोबल मल्टी बिलियन डॉलर के पॉलिटिकल मार्केट में आप अपना सफल कैरियर बना सकते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स में या पैसिव वे में आप कैसे पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं,